Hello friends, hope you all are good. Today we are continuing our first category in alphabet writing, which is letters with standing and slipping lines. So let's learn alphabet with Prisha. So let's start with letter T. Okay Prisha? Okay, Mama. Okay. So Prisha, T for क्या होता है? Train. Train. बोलो. Train. Train. Yes. और T says T. Ta. T. Ta. T. T. Train. Train. यस अब हम सीखेंगे टी से और कौन कौन सी वोकैबुलरीज होती हैं ओके Okay. ओके सो कैन यू गेस फर्स्ट पिक्चर क्या है Ta. Ta. Tree. वेरी गुड ट ट ट्री यानी टी फॉर ट्री Tree. बोलो टी फॉर T for ट्री tree. नेक्स्ट इज टी फॉर टेंट Is T for tent. टी फॉर टोज For toes. टी फॉर टेन T for ten. एंड टी फॉर टंग T for tent. अब प्रिशा एक बार रिवाइज करेगी ओके टी फॉर ट ट ट ट Ta. 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 Tree. ट्री वेरी गुड ट ट ट Ta. ट Ta. 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 Tent. वेरी गुड Ta. 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 टोस Toes. Ta. 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 Tan. Ta. 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 Tongue. वेरी गुड प्रिशा अब हम सीखेंगे टी लिखते कैसे हैं ओके Okay. सो पेरेंट्स सबसे पहले हमें बच्चे को अल्फाबेट लिखना सिखाने के लिए ट्रेसिंग लाइन का यूज करना चाहिए सो प्रिशा हम टी बनाना सीखेंगे फर्स्ट ओके Okay. ओके फर्स्ट वी मेक अ स्टैंडिंग लाइन Standing line. कैसे होती है स्टैंडिंग लाइन Standing. यस आज हम टॉप पे बनाएंगे स्लीपिंग लाइन Line. यस अब आप ट्रेस करके दिखाओगे प्रिशा Standing line. वेरी गुड And sleeping line. वेरी गुड वन मोर टाइम प्रिशा One standing line and one sleeping line. यस स्लीपिंग लाइन इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैंडिंग लाइन Okay. ओके नाउ पेरेंट्स जब ट्रेस करना बच्चा सीख जाए उसके बाद हम डॉट्स के थ्रू बच्चे को टी लेटर लिखना सिखाएंगे प्रिशा नाउ जॉइन द डॉट्स ओके Okay. फर्स्ट ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइन यस नाउ ड्रॉ द स्लीपिंग लाइन एक्सीलेंट प्रिशा Parents, this time we reduce the numbers of dots. So Prisha, now draw the letter T. One standing line and one sleeping line. Very good. One standing line and one sleeping line. Excellent, Prisha. Join the dots, Prisha. गुड और पेरेंट्स लास्ट में आप लोग एक डॉट देंगे बच्चे को और बच्चा अपने आप लेटर लिखना सीखेगा ओके प्रिशा Okay, Mama. ओके लेट्स स्टार्ट स्टैंडिंग लाइन And one sleeping line ऑन द टॉप on the top. यस So Prisha, next letter is letter L. L. L says L. La. La 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 lollipop. La 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 lollipop. Yes, la 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 leaf. La 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 leaf. La 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 lemon. Yeah, आपको अच्छा लगता है lemon? No. Okay, la 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 lamp. La 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 laptop. La 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 Leaves. lip. La 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 la. Lizard. Do you like lizard? No. No. Okay. So first we draw one standing line Standing line.
And after that, we draw a slipping line on the bottom. The bottom. Yes. अब मुझे आप जरा फिंगर से करके दिखाना L कैसे बनता है, प्रिशा? Yes. Very good. This is L. One standing line Standing line. and one slipping line on the bottom. The bottom. Very good. Standing line and the sleeping line. And slipping line on the bottom. Okay. Standing line and sleeping on the bottom. Slipping line on the bottom. Standing line and sleeping line on the bottom. Yes. Do again. Standing line and sleeping line to the bottom. On the bottom. On the Prisha, next letter is letter H. H. H says her. H is her. Her, hat. Her hat. Her, hand. Her hand. H for hammer. H for hammer. And H for hut. 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 Yes. So Prisha, now we will see how to draw letter H. Okay. Okay. First we draw one standing line. One standing line. Next draw another standing line. Two standing line. And from the mid we draw a slipping line and join these standing lines. Okay. Okay, now trace the H letter. One standing line. And another standing line. Very good. And join this standing line from the mid. Mid. Yes. Very good. Parents, आपको ये सेम पैटर्न फॉलो करना है फ्रॉम ट्रेसिंग टू डॉट फॉर ऑल द अल्फ़ाबेट. और हर अल्फ़ाबेट को आपको 3 से 4 दिन देने हैं. एक ही दिन में सारे अल्फ़ाबेट कवर नहीं करने हैं. Let's do letter E. E. Yes, E says egg. Yes, egg. Egg. आपको टंग बाहर नहीं करनी, अंदर ही रखनी है. बोलो egg. Yes, envelope. Envelope. Empty. Empty. Yes, जब आप वाटर का ग्लास जो है पोर कर देते हो, पूरा गिरा देते हो वाटर उसमें से, तो क्या हो जाता है ग्लास? Empty. Yes, empty मतलब खाली. Yes, elephant. Yes. Now Prisha, we will see how to make a letter E. Okay? Okay. Okay. First we draw standing line. Standing line. After that, one slipping line on the top. Slipping line of the Top. Another slipping line on the bottom. Another slipping on the bottom. Yes, and on the middle, one more slipping line. But this time, this slipping line is small, smaller than other two slipping lines. Slipping line. Yes, Big. yes. और दो स्लीपिंग लाइन क्या होती है? बिग होती है एज कम्पेयर टू मिडल. ठीक है? यस. अब आप बताओ मुझे कैसे बनाएंगे लेटर ई? One standing line. Yes. And one sleeping line On the. on the bottom. Very good. And One more slipping one line. more sleeping line On. of the top. On the top. Yes. And And another sleeping line. Trisha, this is letter I. Letter? Letter I. Yes. And this letter is very special letter. Why, Mama?
Because it has two sound. Two sounds. Yes, जैसे सबके एक एक साउंड थे ना बेटा, इसके दो साउंड है. लेट क्या क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है. पहला है I says E I says E. and I says I. And I says I. Yes, Prisha, let's do some vocabularies, okay? Okay. I for inchworm. For inchworm. 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 Inchworm, okay? Inchworm. I for igloo. I for eagle. Igloo. Eagle. I for iguana. I for iguana. 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 I for instrument. I for instrument. 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 I for your favorite ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. I for iron. I for iron. 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 I for ice. I for Ice. I. Do you like ice? Nah. Nah? Okay. Now Prisha, we will see how to write letter I. Okay. Okay. First we make one standing line. One stand. Yes. And one slipping line on the top and one slipping line on the But bottom. It's very easy. it's very. Okay, do it. Trace. One standing line and one sleeping line On the top. on the top Yes. and another sleeping line on the bottom. Yes. Correct. Very good, Prisha. So, Prisha, now we will do our last letter with the help of standing and slipping line. That is letter F. F. Yes. F says F. F. Fish. Fish. Flower. Fire. 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 Fork. Four. Yes. Prisha, let's see how to write letter F. Okay? Okay. First we draw one standing line. One stand. Yes. Now we draw one slipping line on the top On the top. and one small slipping line in the middle. And one small sleeping line of the In the middle, okay? middle. Yes. Now you draw. You trace the letter F. One standing line. Standing line and one sleeping line and another sleeping line. Okay, tell me which line is small and which line is big. This line is small and this line is big. Yes. Trace again. पेरेंट्स, हम कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगे. जैसे मैं क्ले का यूज़ कर रही हूँ. सो प्रिशा, लेट्स मेक अ लेटर टी. Okay, Mama. One standing line Yes. and one sleeping line. Yes. One standing line and one slipping line on the top. Okay. Very good, Prisha. Well done. Okay, Prisha. Now make letter L. Okay, Mama. Okay, start.
one standing line, Okay. and one sleeping line On the on the bottom. bottom. Yes. Now make a letter I. I. One standing line Okay. and one sleeping line and another sleeping line on the bottom. Very good. Excellent, Prisha. Give me high five. Very good. Now make a letter H. H. Yes. One standing line and one more standing line and sleeping line On the on the bottom. no, it's not a bottom. It's the middle of the standing line. Okay. Very good. Are you enjoying? Yes, Mama. Okay. Now, next letter is letter E. E. Yes. How we make letter E? One standing Okay. and one sleeping line Okay. And and another big sleeping line Yes. on the bottom. yes. And Sleeping line of in the middle. in the middle. And this slipping line is smaller than Small. these two slipping lines. Sleeping line. Okay. 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 Now next letter is letter F. F. F for fish. One standing line. Okay. And one sleeping line. Okay. And a big sleeping line. यहाँ पे करो. चलो. And a big sleeping line. This is a big slipping line. Okay. Okay. And next one is And next one is small sleeping. yes. Very good, Prisha. जैसे हमने क्ले का यूज किया है, आप मैचस्टिक और टूथपिक का भी यूज कर सकते हैं. इससे बच्चा इंटरेस्ट के साथ इजीली अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज कर लेता है. जैसा कि आपने देखा, हमने इस वीडियो में स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की हेल्प से बनने वाले लेटर्स कवर किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी सेकंड कैटेगरी कवर करेंगे. Yes, make letter H. Very good. Now make a letter I. I. Yes. Wow, Prisha, it's look very colorful. Yes, Mama. Prisha, which letter is this? This is the I. Very good. Make letter L. L. Very good. Mama, please hold it. Okay. Very good. Wow, which letter is this? This is the L. L. Wow. And last letter is letter T. T. Make a letter T. Wow. Are you enjoying this activity, Prisha? Yes, Mama. Mama, done. Wow, Prisha, you did very good job. Clap for yourself.
Okay, Prisha, tell me, where is letter F? F. Wow. And where is letter H? H. Good. And where is letter E? E. Wow, you remember all letters. Yes. Okay. Prisha, do you want to say something to your friends? Yes, Mama. Friends, do like and subscribe my channel. और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना. Till then, bye-bye. Till then, bye-bye. I hope you like this video and please share your feedback in comment section.